Hello everyone, welcome to the channel. My name is Sam Adam. Thank you for joining me. आज कर रहे हैं हम IELTS Speaking Part 2 Q Card 1. Q Card 1 जब आप एग्जाम करते हो जो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, IELTS Speaking Part 2 की प्रैक्टिस है. मैं आपको ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, describe a time when you spend a lot of money on something. ये अगर Q Card आप एग्जाम में बैठे हैं तो ये आपको Q Card मिलता है. तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइम डिस्क्राइब करना है जहाँ पे जब आपने बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड किया उस टाइम पे. तो नीचे क्या लिखा हुआ है, ये एग्जामिनर आपको A4 साइज का लेमिनेटेड पेपर देगा और उस पेपर आप लिख नहीं सकते हैं. उस पे ऐसे कार्ड लिखा होगा डिस्क्राइब ए टाइम, या कोई भी क्वेश्चन है लेकिन ऐसे होगा, डिस्क्राइब ए टाइम यू स्पेंट a lot of money on something. अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है, ठीक है, आज मैं आपको दो आंसर्स दूंगा इसके. एक आंसर होगा नॉर्मल और एक होगा बेहतर अच्छा आंसर जिसके बैंड ज़्यादा मिलते हैं. तो पहले हम क्या करेंगे, उस आंसर को देखेंगे जो नॉर्मल आंसर है, उसमें बैंड्स आपको पास मिल ही जाएंगे, ठीक, अच्छे बैंड मिलेंगे. लेकिन जो दूसरा अल्टरनेटिव आंसर है उसमें आपको बहुत अच्छे बैंड मिलेंगे. तो आपने क्या करना है, सुनना है उसको. ये प्रैक्टिस हो रही है आज, IELTS Part 2 स्पीकिंग की प्रैक्टिस है. आपने सुनने हैं दोनों क्वेश्चन को स्क्रीन पे, उनके स्क्रीन पे आपको लिखे हुए वर्ड्स भी मिलेंगे और साथ में वॉइस भी मिलेगी. तो आपको, ताकि आप सुने के आंसर मैंने कैसे करना है, आपने जब शुरू, क्योंकि इस Part 2 में एग्जामिनर कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ आप बोलेंगे. आप उससे पूछ भी नहीं सकते हैं कि ये राइट है, यस है, नो है, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको अलाउड ही नहीं बोलना. सिर्फ 2 मिनट आपने बोलना है. तो आपने, जो मैं आपको मॉडल आंसर 1 और मॉडल आंसर 2 दे रहा हूं, आपने ऐसे फ्लो में ऐसे बात करनी है, ठीक है. तो ये देखें, ये क्वेश्चन है कि यू शुड से व्हाट डिड यू बाय, क्या बाय किया है, क्या कर रहे हैं, कि देखें यहाँ पे डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन समथिंग. तो समथिंग क्या है, आपने बाय कुछ किया है, ठीक है, उस वक्त आपने बहुत पैसा स्पेंड किया, तो उस टाइम को मैं कि आपने क्या बाय किया है, कब बाय किया है, व्हेन डिड यू बाय इट, वेयर डिड यू बाय इट. तो कहाँ, जगह बुलानी है, लोकेशन बतानी है कि कहाँ से बाय किया. एक्सप्लेन व्हाई यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू बाय इट. तो आपने क्यों एक्सप्लेन करो कि क्यों इतने पैसे स्पेंड किए हैं. ये सारी चीज़ आपने एक स्पीच में, 2 मिनट की स्पीच में आपने बोलनी है. ठीक हो गया. तो आइए वीडियो शुरू करते हैं. इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मॉडल आंसर 1 और मॉडल आंसर 2, उसको देखते हैं. IELTS Speaking Part 2. Q Card 1. Describe a time you spent a lot of money on something. You should say, what did you buy? When did you buy it? Where did you buy it? Explain why you spent a lot of money to buy it. Model answer 1. Well, let me tell you about a time when I spent a lot of money. It was Christmas time, but also it was time to get a gift for myself. After a long year of hard work, not to mention a grueling one, it was time to spoil myself a little bit. I knew exactly what I wanted, which was the latest iPhone. I had mine for about 3 years and I knew it was time for an upgrade. So, I carefully saved up money throughout the year to make sure I could provide this for myself at the end of the year. The day before Christmas, I went onto the C train that takes to downtown, and from the train station, I walked for about 15 minutes, and I arrived at the Apple store. I knew it was going to be a lot of money, but then again products last for a very long time. That's why I decided to get it. After leaving the cashier counter and leaving most of my money, I quickly went back to the train station with my bag in my hands and headed home. When I arrived there, I was so excited to open it and test the new phone. In conclusion, it was worth it. This is the end of the model answer 1. Now let's go to an alternative answer to the same question. Let's call it Model answer 2. Sure, let me share an experience when I made a significant purchase. It was around Christmas time, and I felt it was an opportune moment to treat myself after a demanding year of hard work. Having used my previous phone for about 3 years, I knew it was time for an upgrade, and the latest iPhone was at the top of my wish list.
Throughout the year, I diligently saved money with the goal of purchasing the new iPhone by the year's end. The day before Christmas, I embarked on a journey to the Apple Store, located downtown. I took the C train and walked about 15 minutes from the station to the store. Despite knowing it would be a considerable expense, I was convinced of the product's quality and longevity. Upon reaching the Apple Store, I made the purchase and parted with a significant portion of my savings. Despite feeling a bit apprehensive about spending so much money, I reminded myself that Apple products are known for their durability and lasting value. With my new phone securely in hand, I quickly made my way back to the train station and headed home. Upon arriving home, I eagerly unboxed and tested my new phone, feeling a sense of excitement and satisfaction. Looking back, I can confidently say that the investment was well worth it, as the new iPhone has been a valuable asset and has greatly enhanced my daily life. This is the end of model answer 2. ओके आज की वीडियो इतनी थी। सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं आपको फ्री में आइल्स सिखाऊंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए कि मैं रेगुलर ना वीडियोस, और भी मेरे बहुत सारे काम हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे टाइम मिले कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना के ना तो अपलोड करता जाऊं, ताकि आप फ्री में आइल्स करें, घर में आराम से बैठे वीडियो ऑन करें, देखें, जब भी जितनी बार भी देखें इसको समझें और आइल्स जो है ना वो फ्री में पढ़ें। आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस चैनल पे मैं बाहर की यूके, यूरोप और जितनी है वीज़े इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी जो भी मिलता है मैं लेके इसको इस पे चैनल पे लगाता हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके, इजी हो सके। आप दुनिया पता नहीं किधर किधर जाती है, क्वेश्चंस होते हैं, आंसर करने वाला कोई नहीं होता। इसके पास जाओ, उसके पास कोई भी सही आंसर नहीं देता। तो मैं आपको यहाँ पे फ्री में आपसे काफ़ी सारे आपको आंसर्स, जितने भी जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, उनको भी मैं उसी वक्त जवाब देता हूँ। फ़ोन कॉल करते हैं, उसको भी आंसर करता हूँ। मैं आप लोगों की इसलिए आंसर करता हूँ कि ये भी एक खिदमत खल्क है कि आप किसी को उसका थोड़ा जवाब ढूंढ रहा है कोई इंसान, तो उसको उसका जवाब दे दो, उसकी लाइफ थोड़ी ईजी कर दो, तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लया अली गया।